क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान चंडीगढ़ के द्वारा उन्नत एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी होशियारपुर पंजाब के सहयोग से आरआईसीएम सेक्टर 32 चंडीगढ़ के परिसर में भारत और श्रीलंका के बीच सहकारी संवाद, व्यापार और क्षमता निर्माण पर एक कोऑपरेटिव मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीलंका की ओर से डॉक्टर शनंथ्या जयरथ ने वरिष्ठ परामर्शदाता, व्यापार, वाणिज्य, खाद्य सुरक्षा एवं सहकारी विकास मंत्रालय तथा माननीय सहकारी मंत्री श्रीलंका सरकार के सलाहकार एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास संस्थान श्रीलंका के निदेशक और भारत की इस यात्रा में वो आए थे। तो इस अवसर पर भारत के चयनित सहकारी नेताओं और सहकारी संस्थानों के प्रतिनिधि तथा विकास क्षेत्र के जुड़े विशेषज्ञों ने इस आयोजन में भाग लिया। इस संवाद सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच सहकारी से सहकारी सहयोग को दृढ़ करने के लिए और विशेष व्यापार, संस्थागत साझेदारी, क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में और विचार विमर्श तथा अनुभव को साझा करने हेतु एक केंद्रीय मंच प्रदान करना था। इस अवसर पर श्रीलंका से आए हुए विशेष संवाद करने के लिए डॉक्टर संजय जयरथ ने और भारत की ओर से विशेषज्ञों ने क्या कहा, सुनते हैं मीडिया जंक्शन 21 पर सुरेंद्र नेगी के साथ आरआईसीएम परिसर सेक्टर 32 चंडीगढ़ से। How does Sri Lanka envisions this meet today? How would you describe today's meet and especially purpose of behind that? Yeah, it's a good opportunity for both countries to share experience in cooperative development. So at this particular meeting, we looked at the avenues that we have got in the cooperative sector, especially the cooperative to cooperative relationship building, which we have not thought of for many years. So therefore, we can definitely have a lot of exchange programs, knowledge sharing programs, capacity building programs together to develop the cooperative principles and also the sector in particular. Do you think, sir, these meetings, you are taking part of this meeting, it is the outcome of your relations of two countries? Certainly, yes. Certainly, it is the outcome of our relationship of the two countries. India has been a true friend for Sri Lanka. At all the difficult times, India has come forward. Even during the COVID, India was the first. And even here recently, the Ditwa cyclone that affected almost all the districts in the country, Sri Narendra Modi, the Prime Minister, came forward and helped us in different ways. Even today, some Indian armed forces are building bridges in Sri Lanka. RDF personnel were there in Sri Lanka for about 3 weeks rescuing many people. And doctors from India, they were in remote villages during this, Ditwa cyclone period and helping us. Then helicopters from your Air Force were helping us, taking dry rations to people and, various transport facilities are provided by the Indian Air Force. And Neighbor First initiative by the government of India is always there. At any difficult time for Sri Lanka, Indian government volunteered to help us. And recently, Sri Jaishankar visited Sri Lanka a few days back. And he came with a credit line of 450 million USD, 100 million grant, and 350 million credit line. So NCL and CWE, Cooperative Wholesale Establishment in Sri Lanka, when we sign an MOU with NCL and NAFED, I think we can even use this credit line for food security purposes. And also there are a lot of other development work that we have initiated in Sri Lanka with the help of Indian government. India and Sri Lanka have been SAARC countries, and we have worked together in global issues. India and Sri Lanka have stood together.
when the IMF proposed this reforms, India helped us. Indian finance minister helped us quite a lot in our negotiations. We are in a IMF program these days until 2028. We suffered a huge crisis, financial crisis in 2022. India was the first to restructure the loans that we had taken from them. So India is actually a true friend, not only for cooperatives, for other, engagements as well. So I thank the government of India, the Prime Minister, and the people of India for helping Sri Lankan people at difficult times. So how do you see the geopolitics of South Asia, specifically in terms of as if Mr. Trump has been imposing the new tariffs and all that? How do you see that, sir? Yeah, of course. It's not only, of course, for one country. They have imposed, many restrictions. Even recently, Trump government imposed visa restrictions. So if we work together, if we get together, we can, face any tariff wars or whatever. I think that is what India and Sri Lanka are doing and trying to do. And certainly we will be able to, work together to face all these, difficulties. And we have our own market in our region. So therefore, we don't need to bother about these tariffs as long as we work together. Unity is, of course, there. So we can combat any wars, any problems. मेरा नाम ज्योति स्वरूप है। मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ उन्नति कोऑपरेटिव सोसाइटी तलवाड़ा पंजाब का। अभी हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का इवेंट जो था वो श्रीलंका में हुआ था और जिसके अंदर हमने अभी जो 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स था वो मनाया था, तो उसको ख़त्म किया गया कि उसका समापन हुआ था। तो उसी दौरान जो था एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के अंदर जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिलके काम करना चाहती हैं। उसी का हमारा एक बॉडी है नीडैक, नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव। तो उसमें हमारा और श्रीलंकन कोऑपरेटिव्स का आपस में बात हुई थी। डॉक्टर जारत ने इज हियर। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि कैसे कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव हम ट्रेड और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो स्टेब्लिश कर सकते हैं। दोनों कंट्रीज अगर साथ में चलेंगे तो बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे लोगों की डेवलपमेंट का स्कोप है, क्योंकि कोऑपरेटिव जब कोऑपरेटिव से हाथ मिलाता है, विच इज आवर 6th प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव, तो कम्युनिटीज डेवलप होती हैं। तो उसी सिलसिले में हमने डॉक्टर जयरत्ने को इनवाइट किया था। गवर्नमेंट लेवल पे भी काफ़ी सारी बातें जो है हुई हैं। NCL का, नेफेड का, इन लोगों का जो है कोऑपरेटिव अलायंस जो है वो हो रहा है श्रीलंकन कोऑपरेटिव्स के साथ। हम उन्नति में भी इन प्रोसेस हैं कि कैसे हम कोऑपरेटिव अलायंस जो है इनके साथ कर सकें। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वो यही है कि कैसे कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका और कम्युनिटी ऑफ इंडिया जो है वो कोऑपरेटिव के सेतु के थ्रू जो है वो आपस में मिलके एक दूसरे की डेवलपमेंट कर सके। और डॉक्टर जयरत्ने का यहाँ पे आना उसका प्रमाण है।